भाई क्या कर रहे हैं यार तू? यार की करी यार क्यों दिमाग खादा मेरा। ओ हम भी बना लेंगे। ओ अही भी बना लांगे। बॉस ये सब दोगलापन है। ओए सब बकवास करिया ना तू किसे काम दी नहीं तू एक गल करया कर। मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। आई एम आउट। यार मैं नहीं पता मेरा दिमाग ना खाओ जिन्नू जो समझ आंदा कर लो। Hello and welcome. My name is Sanya. You're watching me on Uncut, and I have Rahul Dua with me. Welcome to Uncut, Rahul. हाय सान्या, थैंक यू, हाउ आर How यू? is? I am good. Tell me, क्या आप दिल्ली में हो? क्या दिल्ली की सर्दी आपने एक्सपीरियंस कर ली है? जी बस मैं दिल्ली में ही हूँ। और ये इसके चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरा ना हीटर खराब हो गया है तो मुझे वो ठीक कराना टाइम नहीं मिल पा रहा, हाथ मेरे ठंडे हुए पड़े बहुत ज्यादा। Please take out some time and get a heater, यार. I will. मुझे बताओ, you're hosting Shark Tank this year. कैसा पूरा एक्सपीरियंस था? Did you watch Shark Tank पहले वाला एपिसोड, पहले वाला सीजन? Yes. Not only that, I have watched Shark Tank US as well. In the sense, Okay. not like as a season like a curriculum, as a bits and pieces Yeah. here and there. So I've been a fan of the show when I was in college, 2008 to 2012. My hostel mates used to watch Shark Tank US, and I used to just chime in ऐसा देखने के लिए क्या है क्या नहीं. So interest तो हमेशा से था, and when this opportunity came about, I was super excited, and I think I have done a good job. So starting 2nd January, you'll be able to see if the job is well done or not. मुझे बताओ, what is it like being on like the Shark Tank set? Because we see only the fun parts on TV, right? जी. Actual में कैसा होता है? How long does it take to shoot one episode or like shoot one pitch? Pitches usually, I was told, since I wasn't a part of the making of the show in the previous season, so I was told that previous season the pitches were about 40 to 50 minutes long on an average. Sorry, but this time around, I think the average time has gone up to say an hour 20 minutes, because पिछला season देख के the pitchers have also come very well prepared, and पिछला season देख के the Sharks have are also very sure about what they want to ask and how they want to evaluate. So it's pretty much it's better, certainly better in terms of quality. I'm not saying previous one was bad, but previous ones के learnings लेके आप better ही चीज करोगे ना इस बार. So both in terms of the pitchers who had come in and Sharks' sensibilities, all of them have exceeded expectations this time around. And when it comes to how was it on the set, it is very challenging, to be honest. Like I come from shooting for the web, for the OTT, and it is television is a very different animal altogether. It is like long, extensive working hours with absolutely no certainty. Like I think for almost the entire duration of the filming, everyone on the crew has had running lunches. Like there is no stipulated break. अच्छा सुनो एक बज गया खाना खाने, no, nothing of that sort. I think it was कि जब जैसे जिसको मौका मिल रहा है वो खाना खा रहा है, because ultimately at the end of the day it's a reality television, right? कभी भी कुछ भी reality तो हम predict ही ना करते, reality हम लिखते नहीं, तो वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, and you have to be ready with your game face on and your cameras on. So it was challenging, yet I hope it is fruitful. आपका क्या परसेप्शन था ऑफ लाइक रियलिटी शोज इन इंडिया? बिकॉज अब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रियलिटी शोज आ रहे हैं. पहले थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक रियलिटी शोज आते थे, लाइक इंडियन आइडल, where people are crying, judges are crying, and now it's more about making fun or like roasting people, and there are memes that come out of it. What has that change been? Like आप क्या expectations लेके गए थे when you were going to shoot it? यार मुझे लगता है कि ये शार्क टैंक से ही ये सारा चेंज हुआ है, परसेप्शन शार्क टैंक सीजन 1 से, बिकॉज शार्क टैंक सीजन 1, as it was like a commonly thrown around phrase कि it was a surprise hit, because रियलिटी शो का जो आपने मॉडल, अच्छा पहले तो डिस्क्लेमर ये है कि मैं रियलिटी शो कोई नहीं देखता हूँ, ना इंडियन डांस, ना बिग बॉस, ना ये वो, कुछ नहीं. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दोस. आई डोंट वॉच देम. Not because of what people have been telling me कि अरे ये ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, because of the lack of time. I don't have. Do you watch the ones you're in? So did you watch Comic Stan? That was also sort of a reality show. I watched Comic Stan season 1 only once in my life because I was in it. जब episodes आ रहे थे तब मैं देख रहा था. Comic Stan season 2, Comic Stan season 3
मैंने नहीं देखा। कॉमिक्स सीजन 3 का फाइनल मैंने देखा क्योंकि मैं उसमें था, बस दैट्स इट। मैं वही है कि माय रिलेशनशिप विद कंटेंट इज ऑफ अ टॉक्सिक, इज थोड़ा सा टॉक्सिक, बिकॉज आई वांट टू वॉच द कंटेंट, आई वांट टू बी एबल टू हैव द टाइम टू वॉच द कंटेंट, बट आई जस्ट डोंट फाइंड टाइम। मैं हीटर मेरा ठीक नहीं करा पा रहा हूँ, मैं बताऊँ मैं कैसे वो करूँ, वो सब। तो बट आई थिंक ये मीमिफिकेशन और यू नो a lot of youth and the right kind of youth got associated with Shark Tank season 1. The ones who are in their engineering college final year, who are in the B schools, who are chartered accountants, etc. Like the पढ़ा लिखा विंग, so to say. I'm not saying बाकी reality shows में पढ़ा लिखा विंग नहीं जाता है, but it's just that यहाँ पे बहुत Shark Tank season 1 से एकदम एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गया फॉर क्रिएटर्स ऑफ शोज टू रियलाइज कि ओ हेलो, ये भी करा जा सकता है। मतलब इन द सेंस इट्स नॉट जस्ट लाइक ड्रामा एंड वो 3 बार ऐसे दुल्हन मुड़ मुड़ के देख रही है, वैसा बिजली कड़क रही है, वो उसके बजाय ये भी एक फॉर्मेट है which can work because it has worked. So I think Shark Tank India season 1 has a significant role to play in causing that shift, if at all. Do you think हम इंडियन ऑडियंसेस को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, एंड लाइक शार्क टैंक लाइक जैसा शो, मतलब यू नो यू प्रूव्स दैट रॉन्ग, बिकॉज वी थिंक कि इंडियन ऑडियंसेस को वही चाहिए, एंड देन शार्क टैंक कम्स अप विद समथिंग न्यू. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इंडियन ऑडियंसेस? इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं सानिया। इंडियन ऑडियंस कैसी है एक अम्ब्रेला में डिफाइन ही नहीं करा जा सकता। एंड why I say this with confidence is because I'm a stand-up comedian also, so I've been performing live shows in front of a bunch of audiences, so I know that a Jaipur audience is going to be different from a Hyderabad audience versus a Bangalore audience versus a Delhi audience. Every audience is going to be different. It is your experience and it is your, of course, backed by your skill set and caliber that makes you read the room, that makes you understand what the audiences want. So while there is a specific set of audiences for those overly dramatized reality television shows, at the same time there is a audiences for the digital shows, and at the same time there is audiences for a Shark Tank kind of shows, right? तो इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी with diverse topography and geography, that I think there is, the cake is so big that everybody can have a slice of it, is what I'm trying to say here. कि हाँ, अभी तक अगर वो शोज बन रहे थे जहां पे ओवरली ड्रामेटाइजेशन हो रही है और ये सब हो रही है, उसकी भी ऑडियंसेस है और वो आगे रहेगी। शार्क टैंक वाली ऑडियंस भी है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों ऑडियंस अलग है। देयर कैन बी एन ओवरलैप, दैट्स फॉर द मीडिया जीनियसेस टू फिगर आउट। So you said कि Shark Tank season 1 was a surprise hit. Does that create pressure on you when you're hosting a show like that? Of course. It's a mix of everything, honestly, Sanya. Ki, there is pressure also, there is sense of excitement also, there is a sense of greedy selfishness also. Ki Shark Tank तो बड़ा है, मेरी भी popularity इसके साथ साथ हो जाएगी. You know, all of that is there. And I'm not ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि when Shark Tank का audition आया कि हाँ आप season 2 के लिए audition करें, तो मैंने audition देते हुए मेरे दिमाग में ये था कि I have to do like best job, like the best ever job, because this is just like any other work opportunity that has come, and I treat every work opportunity equally. So I had to do a good job, and back of the mind में कहीं ना कहीं 1-2% वो था कि यार Shark Tank बड़ा शो है, दूसरा वाला सीजन भी हिट हो गया ना, तो अपनी पॉपुलैरिटी थोड़ा निकल आएगी इसके साथ. So I definitely do feel pressurized, but I think वो that kind of propels me to do even better, you know, on a national television. Yeah. So there's one guest, Ashni, that's not going to be on the show. We know enough about him, but can you tell us something about the new guest that you know is coming? Amit Jain is coming. जी अमित जैन आ रहे हैं. He's MD co-founder कार देखो group. He's a very pleasant personality to be around. There's a lot to learn from him. You will see during the course of the show that he has so much to offer. The amount of in-depth analysis that man does is, you know, नए शार्क आए थे ना, तो बाकी सारे पुराने शार्क एक दूसरे जानते, तो और हम भी, वो जब अमित सर बहुत सारे सवाल पूछते ना शुरुआत में ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हैं, दिख रहा है सबको कि ये अच्छा है, या दिख रहा है सबको ये नहीं अच्छा है, बट सडनली एकदम से उनके 17वें 18वें सवाल में ना
कुछ ऐसी चीज निकल के आ जाएगी जिसके बारे में बात ही नहीं हुई अभी तक, then not only the discussion will go towards that, but that might आप देखोगे वो decision काफी अच्छे से influence. So basically, Amit sir gets very deep into analysis, and he wants to get into the core of business. That's very good that he's able to get into the core of business within 1.5 hours of chatting with the said entrepreneurs. So I'm sure he brings a lot to the table. He adds to the overall skill set that the Sharks come together as a group, and I think it's going to be very interesting to see how his and the overall Shark dynamic plays out in this new season. Who is going to give us the best memes this season? Memers going to give us the best memes this season, but as far as content is concerned, I think देखो मैं तो कहूंगा कि मेरे पे मीम बन जाए इतना उतना बेटर है, क्योंकि मैंने देखा जितना मीम बनता ना उतना आदमी ज्यादा वायरल हो जाता. पर आई थिंक अब की बार ना पिक्चर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट आए हैं, तो आई थिंक उनकी जो स्मार्ट टेस्टनेस है ना, उस पे अगर मीम निकले तो वो मजा आएगा देखने में. Okay, towards the end of the interview, I have season 1 के memes. I want you to translate them into Punjabi. Is that okay? Okay. Sure. Okay, no the first. So let's do this. First one is, ओए हम भी बना लेंगे. ओ ही भी बना लेंगे. Okay, ये सब दोगलापन है. ओए सब बकवास करिया ना तू, किसे काम नहीं, तू एक गल करया कर. भाई क्या कर रहा है तू? यार की करी यार, क्यों दिमाग खादा मेरा. Okay, the last one is, इसमें मेरी expertise नहीं है, I'm out. ओ यार मैंने नहीं पता, मेरा दिमाग ना खाओ, जिन्हों जो समझ आंदा कर लो आपे. Thanks so much. I have to ask you, who's your favorite shark? See, I don't pick favorites. मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा यार, इसीलिए मैं I would not like to pick favorites. Everybody has so much to offer, and there was so little time to absorb everything. फेवरेट तो यार मतलब नहीं, फेवरेट हो ही नहीं सकता ना. मतलब अगर मैं किसी का नाम ले लूं कि अच्छा ये मेरे फेवरेट है, देन सडनली माय माइंड विल से कि अरे वो भी तो अच्छा थे इस फील्ड में. सो एवरीबॉडी इज एन ऑलराउंडर हियर. एवरीबॉडी आई जस्ट विश कि सब लोग क्रिकेटर्स होते, तो इतने बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं कि हमारी टीम कभी हारती ही नहीं. तो ये बहुत एवरीबॉडी इज माय एवरीवन इज माय फेवरेट. While hosting, did you also get business ideas? यार नहीं, काम ही इतना होता था कि मैं दिमाग नहीं चलता उस साइड पे. मेरे दोस्त लोग भी पूछते भाई कोई अच्छा बिजनेस आया तो बता दे, हम भी डाल दें 5-10 लाख उसमें. मैं कहा भाई मैं जब पिच देखता था मैं सिर्फ जोक इवेल्युएट करने के लिए देखता था कि इसमें कौन सा जोक मारूं, कहाँ से कौन सा जोक निकालूं. मेरा तो दिमाग ध्यान ही नहीं गया वहां पे कि भाई बिजनेस मॉडल किसका अच्छा है. अब मैं भी सारे इंडिया के साथ बैठ के देखूंगा कि कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा है, किसको अप्रोच करा जा सकता है. Done. Thank you so much for being on Uncut and giving us time. All the best for Sharks. Thank you, Sanya. Thank you so much for having me. Take care.